पता नहीं, वो जा नहीं रहा है। कुछ नहीं होता। डिस्कस लिखने की ज़रूरत नहीं, एक पॉइंटर्स ले सकते हो क्योंकि कुछ खास कंट्रीब्यूशन या नेगेटिव्स नहीं है, वही घिसी पिटी बातें हैं. दैट इज ब्रॉड बैक ह्यूमंस, दैट इज गिव सेंट्रल रोल टू द ह्यूमंस. फाइन. सेकेंड, focused on issues such as cognition, mental attitudes, and therefore established relation between physical landscapes and cultural landscapes. Even if you remember this much, it is fine. So, helps in policy planning, with human centric approach. ये की वर्ड्स है कल के नोट्स के, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ये है एज अगेंस्ट द एटोमिस्ट अप्रोच विच वॉज ब्रॉट इन बाय द दिस थिंग. फाइन, that is the positivism. So you just remember what are the keywords here. And there are more negatives in this. What will be the negative of humanistic geography? So, it is unscientific. Unscientific in nature. Why it is unscientific in nature? Because ये subjective subjects है, mind, attitude, values, culture, etc. It is subjective. You can never tell with authority and prove it कि ये thought process था इसलिए गांधी जी ने ये decision लिया था. This is interpretation. Fine, it is unscientific. Secondly, यहाँ पे investigator जो है, और negatives के लिए you can refer एक fast, कभी भी difficulty लगे fine, you can refer page 350. वैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है who is telling कि ऐसा ऐसा हमने देखा, is there any way of proving कि whether the investigation is right or wrong? No, there is no any theory कि जिससे पता चलेगा whether his thinking is true or false. So investigator what you are saying कि outcome of investigator
कौन सी बुक पढ़ी हिस्ट्री की? स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा। स्पेक्ट्रम बुक है, नोट्स है? हाँ हाँ, तब ये हो सकता है, मतलब पर श्योरिटी नहीं है ना, फिर भी ये हमेशा सब्जेक्ट टू एनालिसिस के लिए। नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट एक थॉट प्रोसेस को हमेशा कोई ना कोई चैलेंज करेगा। यस, ये क्योंकि सब्जेक्टिव्स है, सो दे ऑलवेज विल बी, इन्वेस्टिगेटर विल नेवर बी श्योर। फाइन। हमेशा ये रहेगा कि शायद कुछ ना कुछ मिसिंग है, मिसिंग है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज्ड dualism between human and physical geography, and therefore it affected the unity of subject. Geography is when physical geography and human geography are unified, but अगर आप अलग अलग कर रहे हो उसको तो it will always affect the unity of subject. Always a difficulty of observers bias. You go there, you live with the people, and उसके बाद जो आप research देते हो, it depends upon whether you liked that culture or you didn't like that culture. हमेशा there will be a problem of observer bias. No unity of methods. अभी तक सब में यूनिटी ऑफ मेथड्स है, एंड क्वांटिफिकेशन हो या बिहेवियरलिज्म हो, यहाँ पे कोई कहता है फोटो से पढ़ो, कोई कहता है इससे पढ़ो, देयर आर नो यूनिटी ऑफ मेथड्स टू स्टडी. सिक्स्थ, yes, always there is always a difficulty of observer bias. Why it is always? Even if the observer is not biased, you may think that he is biased. No, this is not postmodernism. Postmodernism is different. Postmodernism is saying that the functionalism ho, idealism ho, everything is there, that is true. यहाँ पे you are saying something. This is a problem for any social science. It is not a philosophy. It is a problem of any social science. Fine. किसी के लिए Indian democracy is a very good democracy, किसी के लिए Indian democracy is a failing democracy. Observer bias. Fine. Let person from China come and see the rights, he will see, wow, how much rights you are having. Let a person from Finland come and see the rights, he will say, इतने बड़े बड़े institutions have, but who has the rights? Right? This is what is known as observer bias. Observer bias will always be there in any social sciences, क्योंकि इक्वेशन नहीं है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस.
It is not providing any alternative कि चलो these are the mistakes of capitalism और positivism, so मैं ये theory दे रहा हूँ. वो just एक criticism बताता है कि देखो ये इसकी mistake है, ये इसकी mistake है, and therefore ये बड़े geographer का sentence है which you can use in conclusion. It is best understood as a form of criticism. Fine? ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के positivism छोड़ के then directly come to this. It is just a kind of an criticism. He is one of the biggest geographers जो हम पढ़ते भी हैं and still he is alive, the Richard Peat. He is one of the main founders of a school which is derived from the Marx Education, London School of Economics, etc. And उसका book भी है which is one of the best-selling book, that is the Modern Geographical Thought by Richard Peat. He is one of the founding members of a school of study we are going to study, that is the radicalism, that is the coming up of Marxism. And one of the original thinkers of Marxism is Jean Bruns. Fine? Is this guy known as Jean Bruns? Yeah, ये. Fine? Vidal de Lablache, Jean Bruns. French School of Geographers. Again, as I told you, it developed as an alternative to the positivist thinking. Why as an alternative to the positivist thinking? Because there were different reasons. One of the reason was increasing poverty in the blacks, which after economic development and itna locational analysis and the economic man, it could not help in removing the poverty of the population in the blacks. So ये trigger point था. That is why the blacks are still living in ghettos or they are living in slums. दूसरा problem था Vietnam War. किसके बीच था Vietnam War? किसने किया था Vietnam War? USA. Fine? So Vietnam War, USA, and therefore Richard Peat ने कहा, जिसका फोटो अभी I have shown you, that one of the, ये तो democracy अपने घर के लिए है, but बाहर तो ये colonialism and liberalism ही करेगा, that imperialism ही करेगा. Fine? That is, there is no respect of the democracy. Democracy is only for whites. It is only for Europeans. But the same democracy, which is considered itself as the best and the world's largest democracy, is exploiting people in the Vietnam. Third was the focus shifting towards feminism and the problem of women in the society, जिसमें objectification or commodification of the woman था. And therefore, this school of geography got inspired from destroying the capitalist economy so that there is no division of the labor, but there is a cooperation in the labor. Division of the labor is a part of capitalist society. If there is no division of the labor, सब एक जैसे है, everyone is doing the same economic activity, it is known as cooperation of the labor, जो socialism, communism या Marxism का concept है. Fine. Secondly, it
वियतनाम वॉर, जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर टू एक्सपोज्ड द ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वियतनाम वॉर एक्सपोज्ड द यूएसए एंड देयरफॉर रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ वाइट्स जो वो बात कर रहे थे, इट गॉट एक्सपोज्ड. Then came one of the bigger geographer known as Blot, and Blot said कि Europe is advanced, superior है Europe in the in science, in everything, because it is just a matter of time and place. It is just a matter of chance and coincidence. ऐसा नहीं है कि historically Europe was advanced. Then he produced the data to show once upon a time the most advanced society was Harappa and Mohenjo-daro civilization or Indus Valley civilization. That time he reminded Europe that you were barbarics. Fine? Fine? उसके बाद it is the Nile Valley civilization which was, उसके बाद Tigris and Euphrates वाला region was most advanced, and that was the dark ages in Europe. Getting it? It is only because of certain reasons, that is you started capturing the countries, imperialism and colonialism से, you plundered the wealth of Asia and Africa, and that Asia and Africa का wealth is responsible for the Europe का this thing development which has occurred in last 150 years only. Before the industrial revolution कोई यूरोप एडवांस नहीं था. हाँ, थोड़ा फ्रांस एडवांस था जहाँ पे the ideas of imperialism etc. came. He said second reason for the advancement of Europe was discovery of America, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, but fortunately, इसलिए वो coincidence कहता है और luck कहता है. Fortunately, America was extremely rich in resources. He then said कि had America के बदले Antarctica been discovered or a country like Australia been discovered, तो फिर क्या करते आप? Fine, where America is fortunately extremely rich in resources and therefore वो यूरोप डेवलप हुआ. So ये सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते गया. इसमें तीन है, एक फेमिनिज्म, एक एनवायरनमेंट, एक स्लम्स एक्सेट्रा. So it said that geography should move away from the positivist and focus on the practical problems such as poverty, slums, feminist issues, environmental issues such as resource imbalance etc. And इसीलिए radicalism is also known as social relevance movement because it brought geography to the subjects which are socially relevant. Getting it? So radicalism is also known as the social relevance movement. And for the first time, the ethnocentricity or European centricity means superiority of the whites was challenged through the publication. और ये सब कौन कर रहा था? A journal known as Antipode. और कहाँ पे हो रहा था ये? इन यूएसए. ऐसा नहीं कि एशियन या एवरीथिंग सब यूएसए वाले ही कर रहे हैं. They are saying कि हम we are not superior. So these are the people. That is why we sometimes say USA is a really true democracy. कि USA में रह के ही USA के हर चीज़ों को वो criticize कर रहे हैं. Fine. So this Antipode journal is still published every month today. जैसे Geography and You is very very famous in India, वैसे Antipode is very famous. मतलब कोई geography का journal जो down to earth is famous in India, वैसे Antipode भी आज famous है. Antipode is proper Marxist, and because it is Marxist, it believes in destroying the existing structure of bureaucracies and capitalists. वो कहता है bureaucracy creates hierarchies, and because bureaucracies create hierarchies, there is a division between rich and poor. And therefore, bureaucracy is a tool of democracy and capitalism. Understanding? Bureaucracy is a tool of democracy, and दूसरा tool of democracy is capitalism. Capitalism से explore करो, exploit करो, and bureaucracy से control करो. And therefore, जो existing bureaucracy है, जो existing capitalist order है, उसका एक ही solution है, destroy it by revolution and replace it by Marx का ideas, Marxian society, in which there is a cooperation, means of production lies with the help of each and every citizens, not with the help of with the few,
fine, in which locational analysis is discarded because location analysis, quantitative revolution, industrial location theory, ये सब यूरोप ने डिज़ाइन किया है for exploitation. Rather than that, you try to build up your own theories as per region and look at what is the best for the region. Bring women back to the mainstream, bring blacks and poors back to the mainstream, fine, do population control to certain extent, remove the state, etc., and change the present economic state setup of the society. क्या क्या बोला उसने? Bring poor to the mainstream, remove the slums, bring women back to the mainstream, change the present economic status of the society. How? By bringing Marxism. That is, जो जमाना ऐसा चल रहा है, उल्टा कर दो, changing the social order. फिर उनको पूछा गया, okay, we bring the Marxism, how it is going to help? They have no answer. If country becomes socialist or communist or Marxist, tell us how poverty will be removed. You give the means of production to each and every person. So सच्ची में हर आदमी इतना होशियार है, इतना capable है. Fine. Second, you tell us how you will bring feminism, women back to the society in the Marxist regime. They have no answer. Getting it? Third, ask them how will you remove slums with the help of Marxist? They have no answer. But they believe in Pareto's optimality. Pareto's optimality क्या कहता है? ये सुना होगा? नहीं. पैरेटोस ऑप्टिमलिटी कहता है किसी का भला करने के लिए किसी का नुकसान करना पड़ेगा. फाइन. टू मेक पुअर रिच यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय रिच and give the excess wealth to the poor. Fine. So that there is equitable distribution of the resources. Pareto's optimality concept says that poor cannot be made rich without rich becoming poor. Robin Hood wala concept. That is what is the Pareto's optimality. Fine. What? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. करप्शन किसने कहा अमीर बनने का तरीका है? बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट. किसने कहा? Not necessary. What is exploitation as again a very this thing. So it is not necessarily. It is based on the taxation etc. region. What is capitalism basically? Capitalism है कि मेरे पास केक है, आप मेहनत करो, मेरा केक बड़ा बनाओ, मैं केक में से एक हिस्सा आपको दूंगा, अगर मेरा केक बड़ा बन गया तो सबको हिस्सा बड़ा मिलेगा. Right? Capitalism is based on the philosophy that my selfish interests are good for the society. If I become rich, fine, I will have 2 cars. I will keep driver. Employment generation कर रहा हूँ मैं. Fine. I will have big house. I will keep servants. Employment generation कर रहा हूँ. So the people should work for me so that I become rich and therefore they will become rich. What is socialism? केक उतना ही रहेगा, but हम सब मिल बांट के खाएंगे. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? हर एक को छोटा छोटा टुकड़ा आता है. Everyone gets less piece. सब भूखे रहेंगे बट सब खुश रहेंगे क्योंकि बाजू वाला भी भूखा है. फाइन. कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि एक के पास बहुत पैसा है, दूसरा भूखा है. यस. एंड सी मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, ये जो 3 मेजर थिंकर्स है. डर्कहाइम इन सोशियोलॉजी, मार्क्स इन
economic setup, and Weber in bureaucracy. Weber gave the term bureaucracy. This all is after industrial revolution. These are reactions to capitalism. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आसपास वाली बात है, और जब प्रोडक्शन ऑफ द वेंट इन द वन हैंड. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दे क्रिटिसाइज्ड इट अ लॉट, बट प्रॉब्लम इनके साथ ये था कि दे डिडंट हैव सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन थे वो इतने रेडिकल थे कि पूरी इसको बर्बाद करके, which is not possible. And unfortunately in 1990s their biggest source of power, their ideal, collapsed. Fine, it broke into numerous parts, and as a result of this people started losing interest in radicalist, people started losing interest in socialism and communism, and they thought कि अब तो देखो capitalism is the only way of living. What? China is more capitalist than India. China says it is the communist country, but it is more capitalist than India. See, you don't, I guess most of you are born after 90s, right? So you ask a person जिसने, मतलब I remember because I am 80s का person, so, and you ask a person who is in the 70s also. So when we were there, तो टेलीफोन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, स्कूटर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, कार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. फाइन. इन 70s रेडियो के लिए भी लाइसेंस लगता था. इफ यू वांट टू बाय अ रेडियो, यू हैव टू विजिट द ऑफिस, ही विल गिव यू अ लाइसेंस. डिपेंडिंग अपॉन कितने पहले है, आपको 6 महीना रुकना पड़ता था टू गेट अ लाइसेंस. देन यू बाय अ रेडियो, एंड रेडियो चलाने के लिए एवरी मंथ स्टैम्प करो लाइसेंस अथॉरिटी से, मे बी तहसीलदार, मे बी एसडीएम, मे बी कलेक्टर, अदरवाइज आप जेल में जा सकते हो. दैट इज व्हाट इज नोन एज लाइसेंस राज. फाइन. आई रिमेंबर माई फादर हैड बॉट प्रिया, जो स्कूटर आती थी बजाज की. सो ही टोल्ड दैट, नहीं, बजाज की एक प्रिया छोटी स्कूटर थी, एक छोटी वाली स्कूटर थी. चेतक बड़ी थी, प्रिया छोटी थी. फाइन. सो he decided to buy the scooter, and then he had to take permission from all the departments, जिसमें 1 साल चला गया. Fine. And then he had to apply for the license, जिसमें 6 महीने लगे, and the scooter came after 6 months to our home, 16 months to our home. That is what is the license raj. Today it is capitalism. If you have money, go and buy anything except nuclear bomb and guns. Fine. That is what is the, so हमेशा radicalism, Marxism, etc. इनके 2 problems होंगे. That is, in the free society it cannot function. वो कहता है कि we want a free society, but because of the license raj never the society will be free. उनका end and means are not same. कैपिटलिज्म कहेगा ठीक है, यू आर फ्री, मेहनत करो, पैसे कमाओ, और जो करना है करो पैसों के साथ. यहाँ पे नहीं, आप मेहनत करोगे पर आपको पैसे नहीं कमाने मिलेंगे. एंड इवन इफ यू अर्न मनी, यू वोंट बी एबल टू स्पेंड द मनी द वे यू वांट. नॉर्थ कोरिया, you listen to a song, you lifetime imprisonment. Fine. You go to an outside website, communicate with someone who is outside, फांसी. You cannot see वहाँ पे any serials, anything, no Google, no Facebook, nothing. Otherwise direct फांसी है, अगर आपने गलती से खोल भी लिया तो. And if you talk to anyone outside, lifetime imprisonment. If you, the songs which are heard, which should be decided by the government. Fine. History is decided by the government. उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक्स होता है हर साल, because उनके ओलंपिक्स में only the Kim Jong-un family has won on the gold. Understanding? This is what is North Korea. And anyone who goes भाग के as a tourist to the outside country is shot. अभी 3 महीने पहले ही एक लेडी को शॉट कर दिया था because she contacted with the American. उनको लगा वो अमेरिकन ऐसा ही एक्सप्लोरर था जो थ्रू चाइना वेंट टू नॉर्थ कोरिया.
एक फोटो पता चला गवर्नमेंट को कि शी इज टॉकिंग विद द अमेरिकन, ये भी हो सकता है कि अमेरिकन हैज आस्क्ड हर रोड कि ये रोड कहाँ जाता है, बस एक फोटो में कैप्चर हो गया, शी वॉज शॉट, फाइन, बिकॉज इफ दे पीपल गेट एक्सपोज टू आउटसाइड नॉलेज, उनको पता चल जाएगा कि बाहर दुनिया कितनी चेंज हो गई है, फाइन, and they will do the revolution over there. So they will always rule with iron hand. नाम के लिए कम्युनिस्ट, नाम के लिए मार्क्सिस्ट, बट हमेशा आयरन हैंड रहेगा, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज दिस थिंग. कैपिटलिज्म में ही आयरन हैंड नहीं रहेगा, बिकॉज इंडिविजुअल्स वर्क फॉर द बेनिफिट. बिकॉज इट्स सिंपल, ये केक वाला एग्जाम्पल है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग यू, केक का एग्जाम्पल इज नॉट मेड, केक का एग्जाम्पल इज व्हाट एडम स्मिथ हैड टेकन टू एक्सप्लेन हिज theory of capitalism. Fine, पाई केक का वाला एग्जाम्पल, ये एडम स्मिथ का ही एग्जाम्पल है. अब इसमें सिर्फ ये है जो विच वी हैव डन इस काइंस का इकोनॉमी, वो कहता है कि इन द कैपिटलिस्ट केक तो बड़ा हो जाएगा, बट जिसके पास ज़्यादा पावर है वो केक खा जाएगा. सो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो व्हाट वी प्रैक्टिस, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, कोई बड़ा केक खा रहा है तो उसको काट के थोड़ा गिव इट टू द poor people also. That is what the mixed economy is. Yes, Marx का concept is socialism. Maoism है ना? किसका? नहीं. I told you that day what is the difference between communism and socialism. सोशलिज्म नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म. माओ का कंसेप्ट इज विद द रूरल इकोनॉमी, कम्युनिज्म. मार्क्स का कंसेप्ट इज विद द अर्बन इकोनॉमी. फाइन. सो रेडिकलिस्ट का, therefore there is no much in radicalism except that थोड़ा बहुत चल रहा है, but again as I tell you, see even I used to like Marxist a lot, communist a lot, क्योंकि वो तब अच्छा लगता है जवानी में, fine, because खून ये कर देंगे, इनकलाब जिंदाबाद, and we will remove all the state ऐसा, but when you will grow up you will see that they don't have any solutions, fine. उनका एक ही solution है, destroy everything and replace it with Marxian ideology. Incremental solutions नहीं, solutions always has to be step by step. उनका ऐसा नहीं है, ये है तो डायरेक्टली ऐसे उल्टा, ठीक ऐसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट होके जाएगा. Yes, it will be reforms. Yes, Marxism believes in revolution, not reforms. Extremism is any extreme thinking. For if you are a Marxist, extremism तुम्हारे लिए capitalist रहेंगे. If you are a capitalist, extreme तुम्हारे लिए Marxist रहेंगे. Radicalism is something in which there at one shot you are going to change everything. Why radicalism मतलब क्या? Radicalism means something, some thinking which calls for revolution, alag thinking, radical thinking. See, even you see Bhagat Singh, in the later part of the life he started realizing कि violence has no solution, and he asked the newcomers कि ऐसा नहीं है. So that is there, fine. इसलिए मैंने कहा था radicalism is very small topic. Radicalism and synonymous तो है. Radicalism can be radical thinking. Extremism is duty, what you do on the ground. Radicalism is what you do in the mind. Terrorists are called as extremist, not radicalist. Religious leaders are called as radicalist.
सिलेबस देखो क्या है, एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड नक्सल प्रॉब्लम्स। फाइन, एक्सट्रीमिज्म थोड़ा अलग वर्ड है, बट चलो ज्योग्राफी में इट डज नॉट मैटर बिकॉज दिस इज नॉट पॉल साइंस या सोशियोलॉजी, यहाँ पे थोड़े मिक्स हो गए वर्ड्स तो चलता है। यही हम पढ़ रहे, वही मुझे बड़ी बात लगती है। फाइन, इन ज्योग्राफी। सो क्या है ये एंटी पॉजिटिविस्ट मूवमेंट, कब? 1970s में। सो फर्स्ट पॉइंट, it is an anti-positivist movement which developed as a reaction to quantification comma emphasis on locational analysis and liberal capitalistic society. Liberal capitalist society which controls the mode of production. Full stop. But this movement later on started believing in Marxist या Marxian एनालिसिस। देखो फिर से पढ़ो स्टेटमेंट, इट स्टार्टेड एज जस्ट अ क्रिटिक मूवमेंट और धीरे 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 जाके वो पूरा मार्क्सिस्ट मूवमेंट बन गया। फाइन, व्हाई? सो दिमाग में लैक ऑफ सोशल जस्टिस, पॉवर्टी। फाइन, उसके बाद मॉडल्स एंड थियरीज में you will see three important thinkers which believe in different schools. One is Gunnar Myrdal. Have you heard the word Gunnar Myrdal? One is Adam Smith. You already know what is Adam Smith. हम इसको नहीं पढ़ेंगे. One is Harold Domer. Have you heard the word Harold Domer? Economics. अपना एक प्लान भी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे है, 5-year प्लान्स में हैरोल्ड डोमर मॉडल. Who were Harold Domer? Economist and urban geographers. Right? सेटलमेंट का जो हमारा चैप्टर है वो पूरा हैरोल्ड डॉमर की बुक से. आई एम नॉट गोइंग टू रेफर माजिद सर's बुक. दैट इज फॉर यू टू कीप इट फॉर रेफरेंस. फाइन. हैरोल्ड डॉमर आर वन ऑफ द बिगेस्ट दिस थिंग which is one of the best selling books today. आजकल जो ऑथर जो बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है वो है होमो सेपियंस.
sorry, Sapiens. You all know, इसके सारे बुक जितने आप पढ़ोगे you will keep on getting more and more insights. I तो ask जो मेंस के स्टूडेंट है to read this book, 21 lessons for 21st century. It talks about everything. Reason, every knowledge, हर चीज का knowledge एक तो इकोनॉमिस्ट को हो सकता है या जोग्राफर को हो सकता है. Understanding? So Gunnar Myrdal was the person who called India as an this economy. ये सब radicalist है, but and we will just refer their names in this. And Gunnar Myrdal gave one of the famous laws for India. He said there are two kinds of model. One is the market based model, and India के लिए he said market based model does not apply. India के लिए there is bazaar canteen model. दो मॉडल है इकोनॉमिक्स के, मार्केट बेस्ड मॉडल एंड बाजार कैंटीन मॉडल. इन द मार्केट बेस्ड मॉडल गुनार मैडल सेज द रूल इज शो मी द क्राइम, आई विल शो यू द लॉ. किसी ने कोई क्राइम किया आई विल शो यू द लॉ. बट इन इंडिया का बाजार कैंटीन मॉडल ही सेज द रूल इज शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ. फाइन. आफ्टर डूइंग क्राइम शो मी किसने क्राइम किया है, देन उसके हिसाब से लॉ चेंज हो जाएगा. गेटिंग इट? इट इज स्टिल ट्रू. व्हाई इट इज नॉट ट्रू? सो इन सब के पीछे दिस वाज द रीजन फॉर कमिंग अप ऑफ रेडिकलिज्म. फाइन. सो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. The radicalism developed mainly concentrating on the issues of social relevance, and therefore it is also known as social relevance movement. They concentrated on the issues such as, write in points even in the exam, they concentrated on the issues such as, first issue, inequality, and injustice. Inequality and injustice first. इसको आप इकोनॉमिक इंजस्टिस बोलो या पॉलिटिकल इंजस्टिस बोलो, दिस ऑल इज एन आउटकम ऑफ इनइक्वालिटी. सेकंड, discrimination against blacks, females, third, economic condition of blacks in USA, which could not be solved by positivist theories. Fourth, growing crime and exploitation of juveniles. एक भी ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है. growing crime and exploitation of juveniles. Fifth,
falling economic slowdown, sixth, underdevelopment, poverty, malnutrition, unemployment, and resource misuse. In third world nations. Six हो गए, seventh. But one of the biggest reason was growing disillusionment with American society. Growing disillusionment with American society. Due to Vietnam War. देखो अब छोटा अगर शॉर्ट नोट आया तो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है, पॉवर्टी, ब्लैक्स, इसको आप यू कैन सब्स्टिट्यूट इट बाय वन वर्ड्स. राइट, सिविल राइट्स मूवमेंट. This is a civil rights movement. 1980s, 90s was the period जब बहुत ज़्यादा disillusionment था, because after Second World War many countries became capitalist. You know this, just try to understand the undercurrents in sociology, history of humans. And suddenly economic slowdown is a capitalist society में हमेशा होगा. There will be always a period of recession and boom. Recession, cyclic order हमेशा चलेगा. So that was the first period of one of the greatest economic slowdowns of all times. इससे पहले capitalism था ही नहीं properly. And as a result of this, कुछ लोग बन गए Marxist, कुछ लोग बन गए hippies. Hippie culture was very much prominent during that time. They had become so materialistic कि suddenly when there was loss of money, they got disillusionment. फिर disillusionment हमेशा जाएगा in the terms of drugs, right? Drugs लेके कहाँ? हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी एंड शिमला के आगे जो प्लेस है मैं भूल गया उसका नाम, कसोल, हिमाचल प्रदेश में. So that is what is the hippie culture. दम मारो दम. Movies also came during that time. And इसीलिए 1980s 90s की मूवी देखना हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, राइट? एंड उस समय कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हीरो भी तो वैसा होना चाहिए. इसलिए प्रॉपर हीरो मिला जो इसके अनफॉर्चुनेटली इससे पहले 12 मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही थी, बट जब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो फाइट करे, आवाज स्ट्रांग होनी चाहिए, दिस गेव राइज टू अमिताभ बच्चन. Understanding? What is Amitabh Bachchan? Fighting against capitalist. Whether it is owner of a timber, owner of, or whether it is कूली में, whether it is anything. So ये undercurrents थे तब. Fine? Which is settling now धीरे धीरे. World is going more towards capitalism. Next.
बिफोर आई, फिर उसके बाद कंफ्यूजन का स्टेट था, क्या करना है यही नहीं पता था. सो यू सी मिथुन, गोविंदा, they were the best people to entertain you during that time. मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा with their antics. उसके बाद थोड़ा सेटल हो गया. when you settle, क्या चाहिए आपको लाइफ में? रोमांस, फाइन. शाहरुख खान, सलमान खान, यश चोपड़ा, स्विट्जरलैंड, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सपने दिखाना. गाना डायरेक्टली शूट होगा स्विट्जरलैंड में, चाहे यहाँ पे हीरो के लाइफ में गरीब दिखाया, वो गाने के लिए डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में जाएगा. तो दैट इज यश चोपड़ा. और अब हर मूवी ऑन नेशनलिज्म. अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज राइट नाउ द ट्रेंड इज नेशनलिज्म. सो नेक्स्ट पॉइंट, according to them, inequality is inherent. Inequality is inherent in the capitalist mode of production. In the capitalist mode of production. Policies such as taxation will not solve the problems. Policies such as taxation will not solve the problems. And therefore alternative environment which focuses on removal of central bureaucracies comma, replaced by anarchist. What is mean by anarchist word? Lack of authority. Replaced by anarchist. Anarchy is not always negative. Understand? Anarchist mean कोई authority नहीं है. Anarchist. Community control is the need of hour. Full stop. And therefore geographers, rather than focusing on locational analysis, should focus on solving these problems of social relevance. The problems of social relevance. Solving the problems of social relevance. देखो, ज्योग्राफी सेटल्ड एज अ सब्जेक्ट. अब कोई डुअलिज्म वो सब नहीं होने लग गया. पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिफरेंट, फिजिकल ज्योग्राफी इज डिफरेंट. जरूरी नहीं इट शुड फॉलो एनी साइंसेस. फिर उनको देखने लग गई पॉवर्टी इन द सोसाइटी. अब सब्जेक्ट के जो यंग थिंकर्स थे एंड यंग ज्योग्राफर्स थे, वो पूछने लग गए हाउ टू मेक आवर सब्जेक्ट रेलिवेंट सो दैट वी कैन रिमूव सच प्रॉब्लम्स. एंड इसीलिए रेडिकलिस्ट. हमेशा यंग जो लोग थे, इवन इन यूएसए, हु वर रेडिकलिस्ट, जिनके जो मैंने फोटो दिखाए जब वो यंग थे, दे वर रेडिकलिस्ट. फाइन. रिचर्ड पिट जिसका फोटो दिखाया,
he was also a radicalist when he was young. It attracted two kinds of people, एक तो angry on the system and दूसरा young. Most of them were young who were dissatisfied with वही घिसी पिटी बातें, behavioralism वो सब के. And they established a magazine on antipode. Draw this diagram with me. It focused on major themes. One of the theme was geography and imperialism. The second major theme was woman and environment. The third major theme was anarchy. Yeah. The fourth major theme was fine. Are you carrying the past year questions? Just open past year question, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग था. टू 2018 का क्वेश्चन. Geography is contested and multi-paradigmic discipline with strong Eurocentricity that has only recently been challenged. कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क्स. एंड क्या क्या लिखना है इसमें? टू 2018 का पेपर, पास इट ऑन पेज. टू 2018 का पेपर. Got it? Question number 5A. If you are looking at 2018 का पेपर. See the demand of the question. पूरा geographical thought 150 words में लिखना है. Multi paradigms. Determinism, possibilism, positivism, behavioralism, fine, humanism and radicalism. Radicalism तक सब कुछ था यूरोसेंट्रिक. एक दो एग्जाम्पल कि हाउ इट फोकस्ड ऑन यूरोप. एंड रेडिकलिज्म ने इस थीम से एंड इस थीम से ये कैसे चैलेंज किया. मतलब दिस सिंगल क्वेश्चन डिमांड्स द नॉलेज ऑफ, फाइन, पूरा ये नॉलेज. जितने भी अपने लेक्चर चल रहे हैं वो सब आपको कंप्रेस करके इस आंसर में लिखना है. सो ऑब्वियसली सच आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ
points, not depth at all. Bas points, example, points, example. Fine? Eurocentricity means, see, centric is, Eurocentric comes from ethnocentrism. You must have heard that anthropocentric approach. ये वर्ड सुना होगा क्लाइमेट चेंज में. सेंट्रिक किसके ऊपर? एंथ्रोपो. एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमंस, विद द बिलीफ दैट वी आर द सुपीरियर रेस, वी कैन डू एनीथिंग टू द एनवायरमेंट एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट. सो एथनोसेंट्रिसिज्म, एथनो इज रेस, रेस सेंट्रिक. एथनोसेंट्रिसिज्म में यू कैन से इंडियोसेंट्रिक मतलब इंडियन सुप्रीमेसी को में बिलीव करते हैं. सो यूरोसेंट्रिक मतलब दे बिलीव इन यूरोपियन सुप्रीमेसी. Don't write anything, try to understand how it focuses on European centricity with this first theme. Radicalism. Yes, 50% of your answer should be पहले के अभी तक, and rest less 50% of your answer should be ये diagram. USA. Yes, after radicalism. हाँ, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं. वेलफेयरिज्म इज जस्ट वन लिबरल स्कूल ऑफ थॉट इन रेडिकलिज्म ओनली. That is not Eurocentric. That is different from Eurocentric. It is only the radicalism that has challenged the Eurocentricity. Which one? Eurocentricity मतलब superiority of white race. Whites are superior than others. Because USA is nothing but, you were absent in that lecture, USA is nothing but Europe only. Settlement of Europe. So हम जब USA की बात करते हैं, it is automatically Europe. Fine? अब दूसरा डाउट आपको आता होगा कि this is a school, this is developed in Europe, yeah, in USA, and can we say they challenged the Eurocentricity? Yes. इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स किस ग्रुप ने किया? ब्राह्मण्स. अगेंस्ट हुम? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स डोमिनेंस के खिलाफ कौन निकले? ब्राह्मण्स ही. सो दिस चैलेंज द ब्राह्मणिकल सेंट्रिसिज्म. फाइन, वही बात है यहाँ. राजा राम मोहन रॉय से लेके everyone was Brahmin only except Phule at the end, right? Everyone was Brahmin. So यही बात है. This is a school in USA only which is challenging, which is telling to them that they are wrong. How it is telling them? उनका कहता है imperialism and colonialism is an outcome of capitalism. Now what is the difference between imperialism and colonialism? When you capture any territory with military rule, military might, it is colonialism. When you capture any territory without military might, it is imperialism. How you capture a territory without military might? By economic activities. MNCs आएंगे, settle हो जाएंगे, or by cultural activities, or by soft loans. So you see how China behaves. China gives soft loans, long term loans, and वहाँ पे अपना ये करता है. Are we doing imperialism? Yes, to certain extent. We do imperialism to certain extent कि हम free भूटान प्लानिंग भी हम देते हैं, उनके ब्यूरोक्रेसीज को भी हम ही ट्रेन करते हैं, उनका डैम्स भी हम ही बनाते हैं. वैसे देखा गया तो दिस इज अ सॉफ्ट imperialism only. That is why we are known as a soft power. China is known as an hard power. अफ्रीका में हमारे दोस्त कैसे हैं? हम वहाँ पे पंचायती राज डेवलप कराते हैं, हम वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, हम उनको ऑडिट्स एंड अकाउंट्स कराते हैं. बट दिस इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज्म. तो इनका कहना है इम्पेरियलिज्म, colonialism, this is all because means of production are concentrated in few hands. Because the means of production are concentrated in the few hands, therefore multinational companies start developing with the focus on profit. As the profit is dependent on resources,
these multinational companies will start now going into the other countries just for exploitation of resources. So agar and exploitation of the resources increases the gap between rich and poor. So if you want to reduce this gap, destroy capitalism so that imperialism will get destroyed and there will be this thing. Fir there is Blount who in the first point only says that generally there is a abhi tak geography which is there has been Eurocentric. इस यहाँ से आया है word, fine. Geography has been Eurocentric. Eurocentric in the terms that right from the school of determinism till now, the theories have been developed in Europe thinking that Europe is in mind, thinking Europe in mind. And these theories which have developed in Europe were exported as ideas, marketed as ideas, best ideas to other countries where they have failed. Central place theory, Weber's industrial location theory has not been successful outside Europe. But ऐसे दिखाया गया कि हमारी theory superior है. He says this is because due to colonialism you had might, you had money, you had power that you could think. And you started exporting the ideas and calling the other people as barbaric. But this was not the always case. Before industrial revolution, फिर उसने history बताई how Eurocentric approach is wrong and how the other parts of the world was well developed. उसने ये बताया कि mathematics, science, geography, etc. develop कहाँ पे हुआ? Many times outside Europe. And it is European kings which because of the worst climatic conditions, उसने Aristotle को भी criticize किया. Europe has the best climatic conditions. Europe had worse climatic conditions, इसलिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा था ढूंढने के लिए अच्छी जगह. And they used to go and capture. And capture करने के बाद they used to study वहाँ का documents, translate them into English or their language and give theories. जो whatever we think कि ये theory तो इंडिया में भी थी, ये theory अरब्स में भी थी, आज कल बहुत लोग कहते हैं, this was told by Blount. Fine. He said that woman and environment, जो मैंने example दिया था personal space वाला, has also been caused due to this thing. And therefore, you have to destroy the hierarchy and bring the integrated labor where there is an equal distribution of labor so that there is equal distribution of resources and thus there is a removal of poverty. ये सब कहाँ पे होता था? In the magazine known as Antipode. Fine? So that is what is the thought of radicalism. Getting it? These are the 5 themes of study. I'll stop now. We'll meet tomorrow. And see, not necessary, ज़रूरी नहीं है, but अगर चाहिए कोई reference book for tomorrow's chapter, if you want a reference book कि कभी notes के बाद you want to refer anything, this is a good book. Models and theories in geography. इतनी मोटी book पढ़नी है? नहीं. Half part of this book is thought. Fine? Rest of the half part is not required. Why I am saying this book? Why I am not saying the other book जो बहुत लोग recommend करते हैं? Both the books are good. Go to the market, open the book, जिसका layout आपको अच्छा लगता है, you buy that. Fine? Because ये topic इतना आसान है कि इसमें बिना book पढ़े ही समझ में आता था. Least cost principle समझ में आया था उस दिन, threshold and least cost principle. Transportation cost वाला principle समझ में आया था. That is the most difficult part of theories. Getting it? So you can buy any of this book. इसका layout is good. ये book इसलिए thick है because half part of this book is paper 2, settlements in India, etc. So Indian geography के लिए थोड़ा help हो जाता है this book. That is why I prefer this book. Fine? If you don't want to purchase, don't purchase because this is not a compulsory book like Savindra Singh.
हैव यू डन द मैप पॉइंटिंग? अलग पेज पे है या कैसे है? कंटेंट अलग पेज पे लिखा है सबने? Submit it to me then. I'll see what you have. You put on the Telegram. You also put on the Telegram. कैसे भी जैसे लिखा है कि नहीं, फिर उसको मत देना, राइट? तुम्हारा ये जो है इसको भी हमें शॉर्ट करना है, इसमें से भी पॉइंट्स लिखना है, इसमें आंसर विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ओनली पॉइंट्स, इज एंड द ऐसा करना ही नहीं होता, फाइन? हाँ, मैं देखूंगा इसमें से कौन से पॉइंट रिलेवेंट है, कौन से नहीं। छोटा ही चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में तो ऑब्वियसली। ठीक है, चलेगा, ठीक है, मैं पढ़ लूँ। तुम्हारे कॉलेज में कॉपी अलाउड है क्या? यू आर गोइंग होम ना? दस मिनट रुक जाओ सर।